empowered professional with 5 years of experience in system administration, infrastructure monitoring tools, and project management, with 3 years core experience in the area of OPS, including tasks like managing AWS, managing Ansible server environment, automation, hands-on experience in managing services such as DNS, Apache, Nginx, FTP, MySQL, NFS, NIS, Squid, Varnish, Mail Server, and many more. Also, a Red Hat certified engineer with being an outstanding teacher with strong classroom management skills demonstrated through 4 years of classroom experience. So, now I invite Mr. Koshal to share their views with you all. Mr. Koshal, can you start, sir? Thank you so much, Navneet sir. Thank you for giving us the opportunity to be here. Yeah, hey, hi everyone. Am I audible to you all? And Yes, the yes. Yes, screen is sir. visible to you all. Kindly give me a confirmation on chat. Yes. Quick. Okay, that's great. Okay, so before starting this beautiful technical introduction of mine, okay, so this is Kushal Samota, and I work with Grass Solution and Red Hat, okay, as a corporate trainer. And as a trading front, I've been actively working as a corporate trainer, and I have delivered so many trainings to HCL, Accenture, Infosys, and a lot of different organizations, okay. And I'm in this field for since almost last 5 to 6 years, okay. Now, so as I'm here to present something on the Red Hat Academy, since you are from the college and I wanted to have something given to you as inputs as to what is Red Hat actually, okay, and what exactly a Red Hat all about, okay. So, guys, the voice is proper. Is there any lag you are facing? Everyone is good with the voice? Yes, sir. Okay, Yes, thank you. sir. So, what do we do? How it is going to benefit the people like you who are going to be out from the college and looking out about their career in the IT technologies? Okay, so first of all, I have some questions. Okay, as you are all from the CS, okay, branch. Okay, so I have a little question over here. How many of you know about Red Hat? Just raise your hands or just write on the chat if you know something about Red Hat. Okay, write on the chat. And what exactly you know about Red Hat? Just write on the chat. Only one answer here. Only one answer. Guys, you are from CS. Red Hat is an open source company. Okay. Okay. Just tell me, what do you mean, or like what do you know about the meaning of Red Hat? What is the meaning of Red Hat? Red means lal and the hat means topi. So we are actually lal topi. Okay. Jokes apart. I mean to say that we are from Red Hat. So this is the world largest open source organization, okay, in the world. Again, I'm repeating, Red Hat is the world largest open source organization in the world. Okay, I hope now you're clear about Red Hat. So my another question to you is, how many of you know about open source? And what you know about open source? Just write on the chat your answers. What exactly a open source is? क्या होता है आखिर open source? Write on chat, quick. Where code is freely available from Vivek, free accessible, that is true.
Write on chat, open source, free to use source code. That is good from Rohit Kumar. Okay. So almost there are 50 members and only I think 5 to 10% persons know about open source. Okay. How many of you know or how many of you use Android phones? Write on chat. How many of you use Android phones? The persons who use Android phones, right? Yes on the chat. Oh, now I'm getting a good replies from all of you. So a lot of people are using Android phones. So great. So I wanted to tell you that the Android, which actually you are using, okay, on your hardware, the OS of your phone, it is open source operating system. Okay. So Android is what? Android is an open source operating system. Okay. And why Android phones are a bit cheaper? As you know, Android phones are a bit cheaper. If I talk about the iPhone, then iPhone thoda sa महंगा hai. But the Android phones are a bit cheaper than iPhone. Why? Because when it come into the market, okay, there is no cost associated with the operating system. Okay, you are able to see the phones from the multiple vendors like Sony, or it is something else like Samsung, OnePlus. There are a lot of vendors. Okay, but operating system is Android. Okay, and why they all are using operating system as Android? Because Android is open source. And what do we mean by open source? Open source means you can change that, you can modify it, you can tweak it. Okay, you have your source code, okay, of Android into your hands. You can do anything, whatever you want to do with this. So source code is open. Okay, so the source code of the operating system is open and it can be modified. It can be tweaked by any of the vendor like the way he wants to be it as. And that is the beauty of open source. Okay. Now, Red Hat is an open source organization and we are the world's largest open source organization. And because of the feature of open source, Red Hat is what we are as of today. Okay. So Red Hat is an open source organization. Now, are you guys clear with the Red Hat? Are you all clear with Red Hat? What actually a Red Hat is? Okay. Now, another important thing I wanted to tell you that, or I wanted to ask you, how many of you know IBM? How many of you have heard about IBM? What is the full form of IBM? Okay, come on guys. Have you heard about IBM? International Business Machine. Okay, so Red Hat is an IBM company. Okay, and we are the part of IBM group. Okay, so I hope now you are very clear with the Red Hat, what actually Red Hat is. So Red Hat is the open source organization and Red Hat is the part of an IBM company. Okay, and IBM is what? IBM is International Business Machine. Okay, so now I will move on. Okay, now see, this particular presentation or this particular seminar is all about Red Hat. Okay, number one, what's the agenda? If I write here, number one is Red Hat. What exactly a Red Hat is? Okay, so I hope you are aware about Red Hat now. Okay, the second thing we are going to discuss here is what is Linux. What exactly a Linux is. Okay, number three, why you need to learn Linux. Number four, why we need to learn Red Hat Linux. आखिर Red Hat Linux को सीखने की ही क्या जरूरत है? Okay. Number five, what are the career opportunities in this Linux field?
how Linux can help you to get a better job in the market. Okay, in the field of, if you say DevOps engineer, if you want to go for the DevOps engineer, how Linux can help you. If you want to go for the cloud operation engineer, how Linux can help you. Okay, if you want to go for the site reliability engineer, that is a very high post, high profile, how Linux can help you. Okay, if you want to go for some MLAI, okay, then how Linux can help you. Okay, so this will be the agenda of today's session. Okay, so we have already done about what exactly a Red Hat is. Okay, now after that, let's talk about Linux. Okay, how many of you know about Linux? Write on chat, yes or no. What exactly a Linux is? Do you guys use Linux, or have you guys used Linux? Okay, I'm getting a good replies. That's great. The session is interactive. Okay, so almost 15 to 20% replies I'm getting. All are saying they know Linux. Okay, and some are saying they don't know Linux. Okay, so let me brief you about Linux today. Okay, see what exactly a Linux is. As you all know about the operating system, okay, there are multiple operating system in the market. Let's say Windows you have, Macintosh you have, okay, Kali Linux you have, Ubuntu you have. These all are what operating systems. Okay, now Linux is what? Linux is a kernel. Okay, what it is a kernel, and kernel is a part of an operating system. It is the heart of an operating system. Okay, as you know, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम नॉर्मल तरीके से समझे देन यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्ट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. बट इफ वी टॉक अबाउट द कर्नल देन वी कैन से कर्नल इंटरेक्ट्स बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. ओके, इट्स समथिंग लाइक अगर आपको आपके हार्डवेयर पे एनआईसी कार्ड को एक्सेस करना है देन यू हैव टू इंस्टॉल द एनआईसी कार्ड ड्राइवर. ओके, so what exactly that driver is? That driver is program. Okay, and kernel is collection of those drivers. Okay, which helps you to communicate between the software and the hardware. And Linux is what? Linux is a kernel. Okay, now on the basis of this kernel, there are multiple operating systems in the market. Okay, so different distributions are based on Linux. Okay, you have Fedora. In Fedora, you have CentOS operating system, Red Hat operating system. If I talk about Debian distribution, then you have Ubuntu. I hope you have heard about Ubuntu. Ubuntu, Kubuntu, Parrot. These are Debian distributions operating systems. Okay. Number 3, if I talk about the in related to the hacking, then you have Kali Linux. Kali Linux is what? It is also an operating system. Okay. And there are more than 200 plus operating system are available in the market, which is based on Linux kernel. Okay, so Linux is not an operating system, guys. ये कोई operating system नहीं है. Linux सिर्फ और सिर्फ एक kernel है. Okay, और उस kernel को use करके different organizations ने अपने different operating systems के flavors को introduce किया market में. Okay, Ubuntu, CentOS, Red Hat, Kali, Parrot, Tux. There are a lot of more than 200 operating systems are available right now in the market, which are based on Linux kernel. Okay. Now, what is the benefit of Linux among Windows? Okay. आप सब लोग ये जानते हो, अगर हम आज से 4 साल पहले की बात करें then everybody was fond of Windows. Okay, हर बंदा Windows use करता था. Okay, but right now if you see the market, okay, top 30 organizations को आप लो, everybody is going towards Linux. Okay, we can search that over the Google, organization which uses Linux, and see the examples over here.
See, your Google, it is using Linux. Twitter, Facebook, Amazon, IBM, McDonald's, submarines, NASA, even NASA is also using Linux. The United Nations Space Program widely uses Linux in many of their programmers. So आखिर Linux इतना use क्यों होता है? Why Linux is popular? Write on chat if you know anything. Why Linux is popular? I want to have this answer from you guys. इतना popular क्यों है Linux? Why? Security, that is the good answer, Azam. Come on, guys, write on if anything you know about why Linux is more important, okay? Write on chat. Open source, that is good one. Linux is free to access, okay? Sagar. Multi-user same time, security. Okay, everybody is talking about the security, okay? Most of the people. सब लोग security की बात कर रहे हैं. Okay, so let me tell you why Linux is important actually and why you need to learn Linux, okay? See, if I compare two operating systems, on one side, let me place Windows and on one side, let me place Linux. If I compare, okay, Windows and the Linux, okay? Now see the comparison over here. Windows is cost associated, okay? If you have a company, you have a big company, okay, you're the owner of that company, and that company is having 50,000 employees. So for every 50, for each person, you have to provide a system, okay? On each system, if you will install Windows, you have to pay. आपको क्या pay करना पड़ेगा? License का cost pay करना पड़ेगा. Linux is what? Linux is cost free, zero cost. There is no cost associated with the Linux operating system. And Linux is a kernel. आप अपना operating system भी generate कर सकते हो. You can create it. You can build it with your developer team. Okay. So पहली चीज cost you have to pay in the terms of Windows. In the terms of Linux, you don't have to pay the cost. Second, if I talk about security, because everybody is talking about security, तो अगर मैं security की बात करूं, then let's say on Windows you have the exe files, okay? आपके पास exe files होती है जिनके थ्रू आप programs को install करते हो, okay? Linux में आपके पास .rpms होती है, Red Hat Package Management, okay? Like आपको VLC install करना है तो VLC.rpm आपको download करना पड़ेगा. अगर हम Ubuntu पे install करते तो .deb वाली files होती है, okay? Lot of different extensions are there because systems available है. But in Windows you have 8, 10, 7 भी outdated है. Okay. So whenever you download any exe file in Windows, it automatically gets the executable permission. Okay. जब भी आपके Windows operating system में कोई file download होती है, it automatically gets the executable permission. तो वो file बिना आपकी permission के भी execute कर सकती है. Okay. और इसी तरीके से virus enters into our system. But Linux में ऐसा नहीं है. Linux का kernel इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप कोई भी फाइल इंटरनेट से अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करो, इट विल नेवर हैव द एग्जीक्यूट परमिशन. उसको कभी एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं मिलेगा. यू हैव टू गिव इट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट एज अ प्रोग्राम. ओके, क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई देयर आर वेरी लेस वायरसेस फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. क्यों? Because whenever you download any file from the internet, it never gets the execute permission. तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी का पॉइंट है. Number 2, let's say if I talk about Windows, okay, as you know, Windows is closed source. Okay, Windows क्या है आपका? closed source है और Linux is your open source. Okay, closed source का मतलब है उसका source code आपके पास available नहीं है. Open source means you have the source code. आप उसे अपने according change कर सकते हो. Okay, so see, if a bank is using Windows 10, okay, if you are using Windows 10, आप भी Windows 10 use कर रहे हो. If a person in America is also using Windows 10, okay, then source code is same
एवरीवेयर आपका जो सोर्स कोड है वो क्या है, सेम है हर जगह, चाहे वो आपका सिस्टम है, चाहे वो मेरा सिस्टम है, चाहे वो बैंक का कोई सिस्टम है, everywhere on the windows the source code is same, so it is really very easy to hack. If I make a application on my windows system, okay, to hack someone, there is a 99% probability कि वो application आपके system पे भी run करेगा, okay, because source code I know, okay. But in Linux, okay, let's say bank is using CentOS. In America the person is using CentOS, and if you are using CentOS, okay, now what the quality you have here, आप इसे modify कर सकते हो. See, बैंक ने सारी commands change कर दी, okay. Now no one knows कि क्या command चलेगी अगर हमें files list करना है तो. As you know, हम CMD पे commands चलाते हैं, okay. अमेरिका के अंदर जो person CentOS use कर रहा है, he have changed the CentOS as his way, उसने अपने according उसे change कर दिया, okay. एंड आपने भी अपने अकॉर्डिंग इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ओके. पोर्ट ब्लॉक कर दिए, फायरवॉल इनेबल कर दिया, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल कर दिए, बिकॉज पूरा ओपन सोर्स है, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. तो व्हाट इज मोर सिक्योर? वो ज्यादा सिक्योर है जिसका सोर्स कोड हर जगह सेम है, या वो ज्यादा सिक्योर है जिसको आप चेंज कर सकते हो? ऑब्वियस, जिसको आप चेंज कर सकते हो दैट इज मोर सिक्योर, ओके. बिकॉज हर जगह पे इसका सोर्स कोड क्या है, डिफरेंट है, ओके. तो अगर मैं कोई एप्लीकेशन बनाता भी हूं, इट डज नॉट मैटर कि वो आपके सिस्टम पे रन करेगा या नहीं करेगा, ओके. बिकॉज मेरी एप्लीकेशन में मैंने जो कमांड्स यूज करी है, डज नॉट मैटर कि वो आपके सिस्टम पे रन करेगी या नहीं करेगी. मे बी आपने चेंज कर दी हो सारी कमांड्स. सो ऑन द विंडोज लेवल यू हैव द सोर्स कोड एज सेम. लिनक्स में हमारे पास सोर्स कोड क्या होता है, हर जगह डिफरेंट होता है, आप चेंज कर सकते हो, ओके. दैट्स व्हाई इट इज मोर सिक्योर, ओके. So security के there are two reasons. Number one, exe file. Number two, the source code is same everywhere in the case of Windows. Okay. Number three, if I talk about Windows, then in Windows, you have different versions like Home, Professional. Okay, there are a lot of versions. If I talk about Home, तो आप यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकते. इफ आई टॉक अबाउट प्रो वर्जन, तो आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, ओके. तो यूजर मैनेजमेंट भी विंडोज के डिफरेंट फ्लेवर्स पे डिपेंड करता है. बट इन लिनक्स यू हैव 100% यूजर मैनेजमेंट. आपके पास 100% यूजर मैनेजमेंट है. आप कोई भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, 4 बिलियन तक यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो, ओके. यू हैव द कैपेबिलिटी बिकॉज इट इज ओपन सोर्स, ओके. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर एक और बात करें, देन Windows only comes in the GUI mode. GUI का मतलब होता है graphical user interface. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, this is your graphical user interface, okay? So Windows only comes in GUI, but Linux comes in GUI also and CLI also. अगर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही कमांड लाइन टाइप से इंस्टॉल किया है, then it would be very tough to hack that system because you need to remember each and every command, okay? Like विंडोज में हमें पेनड्राइव फॉर्मेट करना होता है, हम माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट कर देते हैं. बट अगर लिनक्स में अगर हमने CLI इंस्टॉल किया है, तो अगर हमें पेनड्राइव फॉर्मेट करना है, देन वी नीड टू रिमेंबर द कमांड्स की क्या कमांड चलेगी. इफ आई टेल यू कि CMD से किसी भी पेनड्राइव को फॉर्मेट करके बताओ, I know only 10 to 15% person maybe know about it. उन्हें पता होगा कि कैसे फॉर्मेट की जाती है, ओके. सो इन लिनक्स अगर आप पूरा CLI ही यूज करते हो, देन ऑब्वियस सी बात है, इट वुड बी वेरी टफ फॉर एनीवन टू हैक, ओके. सो इन विंडोज यू हैव GUI. लिनक्स में आप GUI भी इंस्टॉल कर सकते हो, CLI भी इंस्टॉल कर सकते हो, ओके. ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा CI यूज करती है, ओके. दे ऑलवेज यूज CLI, ओके. नाउ सो ये एक डिफरेंस है सिक्योरिटी का. और अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें विंडोज के अंदर और लिनक्स के अंदर, देन आप रिलायबिलिटी की बात कर सकते हो, ओके. रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी इज समथिंग लाइक कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो, तो वो लॉन्ग टाइम में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है. मींस आज वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या वो 10 साल बाद भी उतनी ही परफॉर्मेंस दे रहा है या उससे थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस दे रहा है? दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. एंड इफ यू
talk about Windows, then as you know, Windows में you don't have permission to stop update. आप 14 days के लिए मैक्सिमम रोक सकते हो. Automatically it will update the system. और अगर आप अपडेट नहीं करोगे, your system will not be working fine. Okay? Linux में you have the choice to update. आपके पास चॉइस होती है. आपको करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है. विंडोज में 14 डेज के बाद इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड द अपडेट एंड विल इंस्टॉल इट. ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम को रिबूट कर देगा. बट इन लिनक्स यू हैव द चॉइस. तो यहाँ पे अपडेट बुरा नहीं है. अपडेट इज नॉट द बैड थिंग. द बैड थिंग इज हमारे पास चॉइस नहीं है अपडेट करने की. ओके, परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम, एज यू नो विंडोज 10 को रन करने के लिए कितना रैम रिक्वायर्ड है? मिनिमम 4 GB. ओके, minimum 4 GB of RAM you require. Okay, if I open my task manager over here, see, this is my task manager. I'm not running anything. सिर्फ मेरा एक PPT चल रहा है, सिर्फ मेरा एक MS Paint का एप्लीकेशन चल रहा है और एक चैट चल रहा है. Only this. And memory at the back end. आप उन्हें स्टॉप भी नहीं कर सकते. If I tell you कि आप इसे रिमूव कर दो, you cannot. Okay, आप रिमूव नहीं कर सकते इस MS Paint को. Why? बिकॉज विंडोज आपको वो परमिशन नहीं देता. ये चले ना चले, इट विल ऑलवेज यूज योर मेमोरी एट द बैक एंड. ओके, सो ऑब्वियस अगर हम सेम रिसोर्सेज की बात करें, देन विंडोज कैन गिव, लिनक्स कैन गिव यू द हायर परफॉर्मेंस. ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है आपको. ओके, इवन 256 MB रैम पे भी यू कैन रन लिनक्स. ओके, लिनक्स का एक ऐसा फ्लेवर भी है जो आप 256 MB रैम पे भी चला सकते हो. ओके, विंडोज में मिनिमम 4 GB रिक्वायर्ड है. एंड लेट्स से इन द फ्यूचर अगर विंडोज ने विंडोज 12 निकाला, एंड इफ विंडोज सेज की 12 को रन करने के लिए आपको मिनिमम 8 GB ऑफ रैम चाहिए, और अगर आपका हार्डवेयर 8 GB रैम को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको क्या करना होगा? हार्डवेयर चेंज करना होगा. तो अगेन आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी. लिनक्स में ऐसा नहीं है. आपके पास 4 GB रैम है. अकॉर्डिंगली 200 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है. आप कौन सा भी यूज करो, डजंट मैटर. आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो. तो क्या ज्यादा बेनिफिशियल है? अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बात करें, देन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ एक चीज मैटर करती है, दैट इज प्रॉफिट. कि प्रॉफिट कहां ज्यादा है. एंड वन मोर थिंग मैटर्स विच इज सिक्योरिटी. कि सिक्योरिटी कहां ज्यादा है. ओके, तो सिक्योरिटी कहां ज्यादा है? ऑब्वियस ऑन लिनक्स. व्हाई? मैं इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूं. आई हैव माय डेवलपर टीम. मेरे पास 12 पर्संस की डेवलपर टीम है जो कंप्लीटली डेडिकेटली मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिक्योर बनाने का काम करेगी. सो आई कैन मेक माय सिस्टम सिक्योर. विंडोज में आई कैन नॉट डू चेंजेस. मैं चेंजेस नहीं कर सकता. आई नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ विंडोज. ओके, सो सिक्योरिटी विंडोज के केस में विंडोज पर डिपेंड करती है. लिनक्स के केस में सिक्योरिटी आपके अपने हाथ पे डिपेंड करती है. हाउ यू वांट टू ट्वीक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड कॉस्ट आपका लिनक्स का फ्री है. यू डोंट हैव टू पे एनीवन. ओके, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. इट इज कंप्लीटली फ्री. ओके, बट इन विंडोज यू हैव टू पे द लाइसेंस. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में विंडोज यूज कर रहे हो, आपको लाइसेंस का पैसा पे करना होगा. दैट इज अराउंड 5 to 6,000 रुपीज. ओके, तो लिनक्स में हमारा कॉस्ट भी बच रहा है, सिक्योरिटी 100% यूजर मैनेजमेंट भी हमारे पास है. CLI में अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो मेमोरी और स्टोरेज को भी कम यूज करेगा. ओके, ग्राफिकल ऑब्वियस ज्यादा यूज करेगा. अपडेट की चॉइसेस आई हैव. सेम रिसोर्सेस में वो मुझे हायर परफॉर्मेंस देगा. ओके, मुझे हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है. ओके, so lot of different features you have in the Linux. That is why you need to learn Linux. आपको Linux क्यों सीखना चाहिए? Okay, that is the truth. Plus all the 30 big organizations are using Linux. Google, IBM, Twitter, Facebook. Why? Because it is completely customizable. आप इसे अपने according customize कर सकते हो. That is the beauty of open source. Okay, that you have the source code completely. अगर आपको डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड इट. ओके, देयर इज अ वेबसाइट kernel.org. सी, यू हैव द कर्नल. आप इस कर्नल को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो. ट्वीक इट. ओके, सो यू हैव freely available this kernel. Now
just a second. Now, अब हम बात करते हैं why we need to learn Red Hat Linux. आखिर Red Hat Linux को सीखना क्यों जरूरी है? Now see, in the market आपके पास overall 8 distributions है. Okay? Fedora distribution है आपका. Distribution is a community actually, और community का मतलब होता है group of people who are working together to build something. Okay? So that is the distribution and the community concept. अगर आप भी किसी community का part बनना चाहते हैं, you can, आप अपना source code दे सकते हो. So Fedora, Debian, okay, Slackware, आपके पास Chrome OS है, okay, and Android is the part of the Chrome OS distribution. Fedora के अंदर you have CentOS, Red Hat का RHEL operating system, Red Hat Enterprise Linux. Debian में you have Ubuntu, Kali Linux which is used for hacking, okay. और अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है हैकिंग के लिए, यू कैन यूज Tux, बेस्ट फॉर हैकिंग, ओके. Slackware you have, number 5 Mandriva, and so on. Total 8 distributions है and 200 plus operating systems available है in the market. आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज करना है, ओके. नाउ सी, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सीखें इनमें से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमें कौन सा सीखना चाहिए? इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, 200 से भी ज्यादा, हम कौन सा सीखें? सो नाउ हम कौन सा सीखें? वी नीड टू लर्न द OS which is a global standard in the market, okay, जिसे हर कंपनी यूज करती है, ओके, एंड दैट इज Red Hat. Now why? There is a reason actually, okay, why you need to use Red Hat, okay. If I give you some examples, if you talk about Aadhaar, I hope you have heard about Aadhaar card, okay. That is, the servers of the Aadhaar is also working on RHEL operating system that is belongs to Red Hat. I hope you have heard about IRCTC, okay. That is the railway platform of India, okay. That is also working on RHEL operating system. Number 3, if I talk about Bombay Stock Exchange, that is also working on Red Hat operating system. If I talk about the fastest supercomputer, okay, that is Summit, then that is also working on Red Hat operating system. So Summit का जो foundation है, that is also on RHEL operating system, okay. Number 5, if I talk about LIC, Life Insurance Corporation of India, that is also working on RHEL OS. All the maximum fortune banking system. Now reason ये है why every organization is using Red Hat. ऐसा क्यों है आखिर? सब Red Hat ही क्यों यूज कर रहे हैं? Why? You can search this. आप हम लोग सर्च भी करके देख सकते हैं इसे. If you want me to search here, see, Aadhaar RHEL. See, Red Hat is the backbone of the Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Aadhaar, GST, LIC, SBI Insurance. The Red Hat is the backbone. Okay. If I talk about Summit, then see, Red Hat Summit super fastest computer. See how Red Hat helped to build Summit, America's top science supercomputer. Okay, new Summit. Okay, so there are a lot of organizations which are using Red Hat, but why? Can you tell me, guys, why? Anyone from you? Why everybody is using Linux or Red Hat Linux? Anyone? Write on chat. Optimistic? No. Free of cost and security? हर operating system free है Linux based. Maintenance server
Hello, am I audible, guys? Okay, the net was disconnected. That's good. Thank you for the confirmation. So let's say you have a project of 5 crore, and to deploy that project or to deploy that applications, okay, you need operating systems. Okay. Now options क्या है आपके पास? You can use Windows, but Windows में you have to pay cost associated. Let's say you are going for Linux. Now Linux में भी कौन सा? CentOS, Red Hat, or let's say Kali or Ubuntu. Which operating system you will prefer? Okay, तो हम हमेशा वो operating system prefer करेंगे which is reliable. Okay, I will always prefer, or we will always prefer reliable operating system. Now reliability का क्या मतलब है यहाँ पे? Okay, it's something like, let's say आपने CentOS use किया. Okay, now CentOS is the open source operating system which is based on Linux. रात को 2 बजे you have some error onto your operating system. आप कैसे solve करोगे? You can Google it. पहला ऑप्शन यही होता है हमारे पास. We can Google this. हम उस error को Google पे copy paste करेंगे and we will search about it कि क्या error है. Now CentOS का ऐसा कोई support नहीं देता आपको. There is no perfect community for that. Okay? 2 बजे रात को error आई. Obvious 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है. एप्लीकेशन आपकी 1 सेकंड के लिए भी बंद होगी तो आपको 1000 lakhs का नुकसान होगा. एंड आप नहीं चाहते कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर 5 मिनट का भी डाउन टाइम आए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज flipkart.com 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर आज 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, व्हाट विल हैपन? क्रैश हो जाएगा मार्केट. व्हाई? सारे ट्रांजेक्शंस रुक जाएंगे, एवरीथिंग. ओके, क्यों? सो फॉर दैट पर्पस हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ओके, विच इज रिलायबल, जो रिलायबल हो. एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर रात को 2 बजे भी कोई प्रॉब्लम आती है, समवन शुड बी देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अस. ओके, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट रेड हैट डज. ओके, रेड हैट गिव्स यू द ओएस फॉर फ्री. आप चाहो तो ओएस फ्री यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, बट रेड हैट गिव्स यू द सपोर्ट. Okay, but for that you have to pay something. तो operating system जो है that is completely cost free. If I take one more example, if I say you कि आप एक HP का लैपटॉप खरीदो एंड उस HP के लैपटॉप के साथ मैं आपको वारंटी या गारंटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूंगा, will you purchase it? No, आप परचेज नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? Because you don't know about that HP हार्डवेयर कब बंद हो जाए. मुझे ऑब्वियस सर्विस तो चाहिए ना. आई नीड सपोर्ट फ्रॉम समवन जिसे उस चीज का नॉलेज है. तो रेड हैट भी यही करता है. रेड हैट गिव्स यू द प्रोडक्ट फॉर फ्री. जितने भी रेड हैट के प्रोडक्ट्स है, ऑल आर फ्री, आप उन्हें यूज कर सकते हो. बट इफ यू नीड सपोर्ट यू हैव टू पे. ओके, सो रेड हैट इज द रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लस इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट open source organization and it is the part of IBM, that is International Business Machine. Okay, so that's why we need to use Red Hat, because that is the global standard. Every organization out of 100, okay, fine, almost 90% are using Red Hat. Why? Because it is reliable. ये आपको support provide करता है. Okay, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके सर्वर में, रेड हैट विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम 24/7 into 365. Okay, now so why Red Hat? Almost 90% of the funded use Red Hat products and solutions. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है रेड हैट के. आपका लिनक्स के प्लेटफॉर्म की बात करें हम तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम which is given to us from Red Hat. Red Hat OpenStack, that is the private cloud. JBoss middleware, cloud forms, storage. Okay, you have different products from Red Hat. Okay, 100% of the airlines in the Fortune Global 500 relies on Red Hat. 100% on telcos in the Fortune Global 500 relies on Red Hat.
healthcare, if I talk about healthcare companies, if I talk about commercial banks, if I talk about US executive departments like NASA, okay, all are using Red Hat. Why? Because it is the world's largest organization. Almost 10 lakh plus projects that it is working on. And from community to enterprise, now see, here in this diagram, you can see all the projects. So what exactly Red Hat does, Red Hat क्या करता है, okay? Let's understand that. So basically Red Hat कोई भी open source project market से pick करता है. And after that Red Hat अपनी developer team के through उस open source project को और ज़्यादा strong बनाता है, उसे reliable बनाता है, उसे secure बनाता है, और फिर उसे free में provide करता है आपको. But if you need support, you need to pay. Okay. So in the Fedora distribution, it has given you Red Hat Enterprise Linux, that is the operating system. Okay. Overt virtualization, OpenStack, storage, satellite, okay, middleware, OpenShift, that is the platform as a service, Core OS, Manage IQ, it has given you cloud forms, Ansible, this is a very beautiful tool of Red Hat. Configuration management के नाम से जाना जाता है ये. Okay. आपको 5000 से कॉन्फ़िगर करना है. Just create your infrastructure as a code on one file, उससे आप push कर 5000 servers पे it will configure everything what you want. तो बहुत easy है. So Red Hat has given you Red Hat Ansible automation. CentOS operating system, it still matters. Okay. That I wanted to tell you. So why we need to learn Red Hat Linux? I hope you are clear with this now. Okay. Now, what are the career opportunities in the Linux field? ये सबसे important question है, for which maybe you all are sitting here. Okay. This is the most important questions. What are the career opportunities in Linux field? So see, if I talk about the career opportunities, okay. Then after learning Linux, you can go for the DevOps path. Okay. You can go for the operation path. You can go for the cloud path. Okay. Site reliability path or SRE path. You can go for ML or AI. Okay. You can go for big data. Okay. You can go for the system administration. Clear? So there are a lot of profiles which are available as the career opportunities after learning Linux. Okay. Now, सिर्फ Linux सीखना ही will not help you that much. Okay. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? There is a reason for that. Okay. See, if I talk about like आज से 10 साल पहले की if I talk about, then you all know हम लोग Windows यूज करते थे. सारी organizations आपकी हर एप्लीकेशन को रन करने के लिए Windows यूज करती थी. Why? Because उस टाइम Windows ही था. Linux came in 1991. Okay, 1991 में आया, 2002 के अंदर ज्यादा फेमस हुआ, 2014 के अंदर बूम आया, एंड नाउ 2020 के अंदर हम लोग इसे यूज कर रहे हैं. ओके, सो इट वाज अ जर्नी of 30 years from 1991 to 2020. Okay, and further. तो why companies are using Linux, ये मैंने आपको बता दिया. So अगर कंपनी अपना एप्लीकेशन ही Linux पे डिजाइन कर रही है तो आपको तो Linux आना ही चाहिए. As you know, if आज से 5 साल पहले आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते, then obviously अगर आपको विंडोज आता है तो आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको जो डेस्क मिलेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे आपको क्या मिलेगा. आज ऐसा नहीं है. ओके, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप किसी कंपनी में सेलेक्ट होगे, ओके, देयर यू विल ऑलवेज फाइंड अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपको वो चलाना नहीं आएगा तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसको कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करेगा. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप रन नहीं कर सकते. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. ओके, so this is the minimum requirement, which is what Linux, कि ये तो आना ही आना चाहिए, because जो भी कंपनी में आप सेलेक्ट होगे, all the organizations are using Linux. क्यों? क्योंकि कॉस्ट फ्री है. So this is the minimum path. Now if I talk about DevOps path,
DevOps के अंदर you have multiple tools like Ansible, सिर्फ Linux पे काम करता है, Windows support ही नहीं करता. Okay, if I talk about some more tools like Maven, Jenkins, Git you have, Selenium you have, okay, Docker you have, Kubernetes you have, OpenShift you have, okay, GitLab, TeamCity. There are a lot of tools, okay, which are available in the DevOps path. Almost 60% of the tools are based on Linux. तो अगर आपको Linux नहीं आएगा, then how will you be able to work on these tools? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, फिर उस पे रही एप्लीकेशंस पे काम करना है. ओके, if I talk about the operation path, if I talk about AWS, okay, that is Amazon Web Services. AWS पे भी जब भी आप कोई इंस्टेंस या कोई मशीन बनाते हो, then Windows आप नहीं परचेस करोगे. Why? कॉस्ट पे करना पड़ेगा लाइसेंस का. तो what you will use? Linux. तो almost 93% of the instances on AWS cloud is based on Linux. Okay, why? Open source है. कभी भी डिलीट किया, नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, स्विच किया, कस्टमाइज किया अपने अकॉर्डिंग, एवरीथिंग यू कैन डू. ओके, बट इन विंडोज इफ यू हैव परचेज्ड अ लाइसेंस वंस, you have to use it for years. Okay, so operation path में if I talk about AWS, आप Azure का एग्जांपल ले लो, GCP का ले लो, Digital Ocean का ले लो. These are the big companies actually which are working in the operation path. Okay, these are the cloud providers. Okay, so almost 93% machines किस पे है? Linux के ऊपर है. Okay, if I talk about the SRE path, SRE is the combination of all. मतलब आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज भी होना चाहिए, डेवऑप्स भी आना चाहिए, क्लाउड भी आना चाहिए, लिनक्स भी आना चाहिए, एवरीथिंग, सबका कॉम्बिनेशन है एसआरई. दैट इज अ वेरी बिग प्रोफाइल. पूरी कंपनी का जो डेटा सेंटर होता है, पूरी कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है, वो आप उसके लिए अकेले रिलायबल होते हो. दैट प्रोफाइल इज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. ओके, एंड देयर आल्सो हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ऑल आर बेस्ड ऑन लिनक्स. MLAI में चले जाओ, बिग डेटा में चले जाओ, लिनक्स के अलावा आप इंस्टॉल नहीं कर सकते विंडोज पे. इट ओनली सपोर्ट्स लिनक्स. इफ आई टॉक अबाउट Hadoop, okay, you can only install it on the Linux, no Windows, because support ही नहीं करता. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल लिनक्स लेवल पे चीजें मैनेज करना, पार्टीशंस, नेटवर्किंग, ऑल द थिंग्स. ओके, ये सबसे मिनिमम पोस्ट है, एंट्री लेवल पोस्ट है. ओके, सो किसी भी करियर पाथ में आप चले जाओ आज के टाइम पे, एवरीवेयर यू विल सी लिनक्स. और लिनक्स में कौन सा भी लिनक्स हो सकता है, बट वी नीड टू लर्न द ग्लोबल स्टैंडर्ड, दैट इज Red Hat. Okay, so how Linux can help you to get a better job in the market? I hope you are aware about this now. Career opportunities क्या क्या है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, you will find Linux on your desk. आपको Linux operating system पे ही काम करना है. Okay, now after this the next important thing which matters is cost. कि आखिर कॉस्ट क्या है टू लर्न लिनक्स. यूट्यूब के ऊपर यू कैन लर्न एनीथिंग. ओके, आप कुछ भी सीख सकते हो, बट देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. व्हाट द प्रॉब्लम इज? आप सब कुछ सीख तो सकते हो, बट कितना सीखना है और क्या सीखना है वो आपको नहीं पता. इफ आई टेल यू पाइथन पढ़ लो, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, कब आपको ये पता चलेगा दैट आपने पाइथन पूरी पढ़ ली है? What we need to do, we need to follow the standard of the company. कि आपको एक ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जिसमें आपको ये पता चले कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करवाती है आपसे. ओके, और उस काम को करने के लिए लिनक्स का कौन सा पार्ट आपको आना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको आना चाहिए. क्योंकि देयर आर मोर देन लैक्स टॉपिक अवेलेबल ऑन द लिनक्स ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर. बट आप कितना सीखोगे और क्या सीखोगे, वो आपका कंटेंट फिक्स होना चाहिए. ओके, इसीलिए हम लोग शायद स्कूल और कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं,
पढ़ तो हम लोग घर पे भी सकते हैं सारी बुक्स खरीद के, बट व्हाई वी ज्वाइन, हम ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? बिकॉज द ट्रेनर नोस कितना पढ़ाना है और क्या एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री के अंदर. ओके, so that's why the training is important. Okay, now what is the cost to learn this Linux? See, if I talk about the nominal cost of Red Hat RHCSA fees, Red Hat, there's the first course, Red Hat Certified System Administrator. The fees is almost 16,500 rupees. Okay, this is the fees. Now, if you are learning Red Hat, okay, from your college, the fees is only 1,000 rupees. And that offer is only valid before December. Okay. So the course of 16,500, you are only getting in 1,000 rupees. Okay. Plus separate charges for certification. That is, in that also you have 50% discount if you are the part of Red Hat Academy. Okay. So if I will tell you if you have to spend 1,000 rupees to learn Linux, वो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है which can help you in your career. चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, okay, everywhere you will find Linux. So what is the bad thing about it? And उसमें भी you have the training. What are the advantages? Training from industry expert, which is already working in the industry. Training from the industry expert, okay. Perfect syllabus, okay. Perfect content, perfect labs, okay. Perfect industry usable examples, okay. Everything you are getting, okay. Then what is the bad thing in this? So that is all about the cost thing. So this is all from my side. हमने रेड के बारे में डिस्कस किया, लिनक्स के बारे में डिस्कस किया, जरूरत है रेड हैट लिनक्स की, क्यों जरूरत है, रेड हैट क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे आप बेटर जॉब ले सकते हो मार्केट में लिनक्स को सीख के. ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड. Now if you have any questions you can tell me. Price Rohit is 50% off. 16,500 का 50% off कर दो आप. Okay, that is the price. 16,500 plus GST का 18% off. Azam, syllabus and all the things will be provided, okay, later. Leo? Okay, duration of this course is 30 days. Okay, only 30 days का course है. 30 to 35 days. That is the duration of this course. 1.5 hours every day. Okay. So 45 hours, 50 hours का course होता है पूरा. So duration is 30 days. Clear? Certification price is 16,500 plus 18% GST. Okay. And in this 50% off. Calculate it and see the price. Okay. And 1,000 rupees for only training. Okay. Classes will be online. Hello. Yeah. Hi Kaushal sir, Navneet this side. I think सभी students अपनी query दे चुके हैं and yes, few more queries are coming. Dear students, आप लोगों को मैंने पहले भी एक session में share किया था that we need 25 student at least in a single batch. अगर आप लोगों का 25 students का एक single batch बनता है तो जो कोर्स आपको भी सर ने एक्सप्लेन किया, करिकुलम एक्सप्लेन किया, ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, क्या प्राइस होगा, ये सब चीजें आपको तभी मिल पाएंगी. तो अगर आप
आप अभी तक के सेशन से मोटिवेटेड हैं, देन शेयर योर नेम टू योर क्लास इंचार्जेस। आपके क्लास इंचार्ज ने ऑलरेडी आपको एक गूगल फॉर्म शेयर किया था 3-4 दिन पहले, तो आप उस पे अपनी डिटेल मेंशन कर दीजिए ताकि हम सर से फिर फर्दर बातचीत कर सकें और जितना जल्दी हो सके हम इस बैच को स्टार्ट कर सकें। राइट सर? बेटा और किसी का कुछ डाउट है तो बेटा क्लियर कर सकता है, अभी सर हमारे साथ हैं। Any questions, guys, over here? Okay, no doubt. So thanks, Kaushal sir. Thank you very much for sharing your knowledge with our students. And definitely we will try to create a good number of batch, and we will continue with you, sir. Okay, welcome, sir. Welcome all. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.